Hi everyone, my name is Anuj Jindal. I welcome you to my channel. Today I want to talk about a very sensitive issue for UPSC aspirants. If you are a student thinking of preparing for UPSC or have already started for UPSC prep, आप भी इस कश्मकश में या इस डायलेमा में होगे. And you must be asking yourself, if not you, then a lot of students around you must be asking you, what are your views as to why UPSC is so adamant and why doesn't it get rid of CSAT? ऐसा क्या है quant reasoning English में that UPSC will not budge, will not listen to you aspirants requests and will not change the syllabus, will not come up with some other subject instead. और ये डायलेमा जब तक आपके दिमाग में से जाएगा नहीं, you will not be able to focus completely on the examination. You will criticize someone or the other rather than just trying to improve upon the subject. So it's very important that we have clarity and trust over whatever we are going to do as an aspirant. Only then it makes sense that you prepare. Otherwise, you will never be able to completely give your 100% in your preparation, especially in CSAT paper, that is quant reasoning in English. तो एक रैशनल इंसान की तरह सोचने की कोशिश करेंगे. दैट्स व्हाट डिफाइंस अ सिविल सर्वेंट. अगर आप कल को सिविल सर्वेंट बनोगे, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट और एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी OLQ जिसको हम बोलते हैं इज दैट यू बी रैशनल इन डिफिकल्ट सिचुएशंस. दिस इज वन सच डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर वी नीड टू बी रैशनल बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन. तो मैं इसको एक रैशनल पर्सन की तरह एनालाइज करने की कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट CSAT that UPSC will not get rid of this subject, this examination, and then we will try and understand the real problems of students as well, and then we'll come to a conclusion as to what is the best option or best way forward that can be taken by UPSC as a body. तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इसकी ऐसा क्या है according to UPSC as a body, as an organization. What is so important about CSAT that it will not give it up, it will not get rid of it and replace it with another subject. सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने कोई भी एग्जाम देना है ग्रेजुएशन के बाद, चाहे वो कैट है, सैट है, GMAT है, all these examinations have quant reasoning and English as 3 standard subjects. तो इसका मतलब ये है that it has been globally accepted and recognized that quant reasoning English are a good पैरामीटर ऑफ योर एप्टीट्यूड एंड योर नॉलेज. आपके एप्टीट्यूड, आपका इंटेलिजेंस, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी बहुत सारे स्किल्स ये चेक करने की कोशिश करता है, थ्रू विच इट डिटरमाइंस वेदर यू आर अ पर्सन हु हैज सम एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑफिसर और नॉट. तो ये ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म है या स्टैंडर्ड है जो बना दिया गया है. अब आप बोलोगे यार, इफ द वर्ड इज फॉलोइंग इट डजंट मीन दैट वी फॉलो द same norm too. We don't have to follow the crowd. We can have some other subjects in CSAT. Well, that question, which is a very, really relevant question, brings me to my second point, which is the problem solving quality of quant and reasoning. जब मैं 11th-12th में था, my father was pushing me to take maths. I was not very keen on taking it up because I felt कि ज़रूरत नहीं है. जब कैट भी दूंगा तो उसमें 10th तक का मैथ्स आता है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. बट माई फादर पुश्ड एंड आई बेंट अंडर द प्रेशर एंड आई टुक इट. आई डिड नॉट रियलाइज इट देन, बट आई रियलाइज इट नाउ. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग differentiation, integration, all those things in 11th and 12th. Those subjects in maths actually teaches you problem solving. Now, problem solving is not the same as calculation. You might ask me further, sir, अगर calculation ही करवानी है तो हर एक शॉपकीपर को IAS ऑफिसर बना दो. ही इज द बेस्ट एट कैलकुलेशन. बट इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट द सेम, बिकॉज कैलकुलेशन में आप बस 1 2 3 4 एडिशन माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे हो. बट इन कोर मैथ्स व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यू आर मेकिंग डिसीजंस. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा. अगर तो इफ देर इज अ ट्रेन लेट्स से रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड यू आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से 120 किलोमीटर पर आवर, then how much time will it take for you to catch up to the train and board the train जिसका डोर जो है सबसे आगे लगा हुआ है. सिंपल सा क्वेश्चन है. अब इसमें किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, हाउ डू यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, आप किस तरह से स्पीड को कंसिडर करते हो, टाइम को कंसिडर करते हो, इफ देयर इज गिवन डिस्टेंस अगर दिया है उसको कंसिडर करते हो,
How do you consider all these different variables to solve this problem and come to a conclusion, to make a decision? That is actually what quant and reasoning teaches you. जब तक हमने पढ़ा नहीं होता है या हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, रियलिटी है हमें लगता है कि ये हमें कुछ नहीं सिखा रहा है. वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू studying history also, by studying geography also, by studying economy also. Yes, we can, but all those subjects have their own ways of teaching us. Similarly, quant and reasoning, maths and reasoning has its own way of teaching us how to solve problems. तो ये एक बहुत लॉजिकल रीजन है, या फिर एक अगेन ग्लोबली एक्सेप्टेड क्यों है कैट और जीमैट में और सैट में क्वांट रीजनिंग, बिकॉज they've realized that problem solving through maths is something that no other subject can teach you. मैं हूं, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त बैठते हैं जिनकी मैथ्स मुझसे कम अच्छी है या मुझसे ज़्यादा अच्छी है, तो हमें ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाता है इफ देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन अस दैट दे आर एबल टू pursue the same problem through a different approach and I am approaching the problem in a different way. वैसे ही किसी एक इंजीनियर के साथ बैठोगे और अगर आप साइंस वाले नहीं हो या फिर ह्यूमैनिटीज़ वाले हो, कॉमर्स वाले हो, उसका सोचने का तरीका अलग है, हमारा सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है. दिस इज वेयर यूपीएससी realizes the importance of quant and reasoning in judging whether you can solve problems the way it wants you to or not, or the way it is required on the job or not. इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत रेलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते. तो ये मैं एक नंबर देना चाहूँगा सीसैट को रखने के फेवर में कि यार वो कुछ ऐसी चीज़ें चेक कर रहा है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन मेजर थिंग, वन मेजर क्वालिटी दैट इज चेकिंग, जो हम किसी और सब्जेक्ट से शायद चेक नहीं कर सकते. एक और पॉइंट आ जाता है कमांड ओवर इंग्लिश. नाउ यू माइट से सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए दैट आई कैन नॉट बी अ सिविल सर्वेंट. अगर शहर से बाहर जाओगे देयर आर सो मेनी रूरल एरियाज जहाँ पर इंग्लिश किसी को नहीं आती है, एंड आई एम द वन हु कैन रिलेट टू देम. वेल योर पॉइंट इज वेरी वैलिड, बट आई एम आस्किंग यू अनदर क्वेश्चन हियर नाउ दैट यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन. Why is it that India is far ahead of China when it comes to service industry or service sector? क्यों हमें बुलाया जाता है back office of the world, but China was not able to attain the same? It was only because of English. 1991 के बाद when we opened up our economy, we were able to integrate with the global economy much faster at a human level because we knew English and China did not. तो ये बोलना सही भी है और गलत भी है दैट इफ यू डोंट नो इंग्लिश देन यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विसेज. व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली यू विल नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू योर विलेज, टू योर डिस्ट्रिक्ट. यू विल हैव टू डील विद द वर्ल्ड, यू विल हैव टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड इन सम और द अदर वे. तो आपको एक बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, एंड इट इज़ वेरी क्लियरली सीन इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो. इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है कंपेयर टू क्वांट एंड रीजनिंग. व्हाई? बिकॉज दे अंडरस्टैंड that if they give you very difficult English, then they are eliminating you directly. But they want you to know a basic level of English, जिससे कि आप ऐसी global communication में you don't lag behind. Even when you are communicating with other states, आप यूपी में posted हो, there is someone posted in Kerala and you need his or her help, then you have to communicate in English. उतनी ही basic English आपसे वो पूछना चाहते हैं और पूछते हैं. तो इंग्लिश की अगर हम बात करें, आई थिंक इट्स वेरी वैलिड एंड रीजनेबल फॉर देम टू आस्क बेसिक इंग्लिश. अगर कल को यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश पूछने लगता है, ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट दे आर नाउ ट्राइंग टू एलिमिनेट अ सर्टेन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो उसको एनालाइज करना जरूरी है, एंड दिस इज टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे दैट यूपीएससी or any other examination, government examination, when they're giving you maths and reasoning, they do not expect you to solve all the questions. वो नहीं चाहते कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से बनाए जाते हैं that they're not solvable in the given time frame. I know the paper was difficult and the paper could not be solved completely in the given time frame, etc. but वो चाहते ही नहीं है आपसे कि आप सॉल्व करो उसको. वो चाहते हैं कि आप you try and figure out which questions are solvable in the minimum time frame
और उन्हीं को सॉल्व करो. So basically they are asking from you, can you manage your time well? Can you take the decision and decide whether question number 1 is solvable in the next 3 minutes, or question number 2 is solvable, or question number 3 is solvable? Which one do I pick up? You have to make that choice in probably 10 seconds, and that choice will determine whether you waste the next 5 to 10 minutes or whether you use it well. So they're trying to understand how do you manage your time. और एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पूरा पेपर करना भी नहीं है. अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो तो भी गलत कर रहे हो. You have to manage your time. You have to learn that art and that skill, and if you're able to learn that, automatically your paper will go well. You'll be able to manage time very easily. You'll be able to manage the questions easily, and you will be able to score above 40-45% with ease if you realize and if you learn the time management skills. अब वो आप कैसे सीखोगे वो आपको धीरे धीरे डिटरमाइन करना है. मैं भी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, बट ओनली वंस यू हैव रियलाइज्ड इट्स इंपॉर्टेंस एंड यू आर विलिंग टू डू इट. तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी नहीं सिखा पाएगा. वो आपको ये सिखा देता है. दिस इज व्हाट दे वांट टू चेक. मेंस में भी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होती है ना. 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं. On an average 200 words per question, so 4000 words you're writing. Very difficult uphill task in mains, but even then you are doing it. Nobody is complaining them. वहां पर भी टाइम मैनेजमेंट है, बट वो अलग टाइप का है. यहाँ वहां पे मैनेज करना है कि आपको 4000 वर्ड 3 घंटे में लिखने हैं. यहाँ पे क्या मैनेज करना है? यू हैव टू टेक द डिसीजन ऑफ लीविंग सम क्वेश्चंस एंड पिकिंग अप सम अदर क्वेश्चंस. तो एक अलग टाइप की स्किल है, एक स्मार्ट चॉइस वाली स्किल है जो हर एक एस्पिरेंट को आनी चाहिए. नहीं आती है तो सीख सकते हो, एंड इट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न इट. 1.5-2-3 महीने में बहुत आसानी से ये आ जाएगी अगर सीरियसली इसको लोगे. तो ये 4 मेजर आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं एज टू व्हाई यूपीएससी सो एडमेंट अबाउट कीपिंग सीसैट, जिसमें से मुझे लगता है कमांड ओवर इंग्लिश जो एक पॉइंट है, उसमें कमांड की जरूरत नहीं है. बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एनीबडी कैन लर्न एंड शुड लर्न, बट सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो वो सीखना, सिखाना, देखना चाह रहा है, वेदर यू नो इट और नॉट, वेदर यू हैव लर्नड इट और नॉट, दैट इज वेरी रेलिवेंट, एंड दैट जस्टिफाइज कीपिंग मैथ्स एंड रीजनिंग ऑफ एनी लेवल इन द एग्जामिनेशन. अब एक रियल प्रॉब्लम उठा लेते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, एंड द प्रॉब्लम इज दैट द क्वेश्चंस आर मेड फ्रॉम इंग्लिश पर्सपेक्टिव एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, जिसकी वजह से क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाता है. व्हेन यू एज अ एस्पिरेंट फ्रॉम हिंदी मीडियम रीड्स दैट क्वेश्चन इन हिंदी, तो आपके लिए वो और मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसका मतलब ही बदल गया. आपको समझ ही नहीं आ रहा है वो कहना क्या चाह रहा है. दिस आई बिलीव इज अ रियल very serious problem that needs to be resolved by UPSC as a body as soon as possible, because ये इसके थ्रू आप स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो if you're not taking the question paper seriously. खाली मेयर ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, उसका जो मीनिंग है, कॉन्टेक्स्ट है, that should also be clear. And I don't think it's a very difficult job. If you put any 3-4 good Hindi professors on the job, they'll be able to figure out very easily कि इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड दे विल बी एबल टू करेक्ट इट विद इन नो टाइम. सो दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव शुड बी लुक्ड इनटू. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं 33% से कम करके 25 कर देना चाहिए, 20 कर देना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए. आई पर्सनली फील दैट दिस इज समथिंग विच इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, एंड महेंद्र सिंह धोनी, one of the best cricketers of India and captains of India, recently said, control the controllables. Now, this is not a controllable for you because you don't know and you don't have control over UPSC. So, why don't you control what is in your control? What is in your control? Learning problem solving skills, learning time management skills, gaining some decent command and knowledge of English. If you can do these 3 things, automatically your ability to counter CSAT questions will change overnight. And this is what UPSC also wants you to learn. That is why it is so adamant about it, because it understands that there is no better method of figuring out your problem solving skills and your time management skills than quant and reasoning.
That is the only reason that SAT, CAT, GMAT, all these exams have also not changed their syllabus in such a long time. With this, I close this session. I hope it was useful. I hope you've learned something new. If you have anything to say at all, it might be completely opposite of what I'm saying. My only request is think like an officer first and then pen down whatever you want to say in the comment section below. I will make sure that I inculcate all the points, even if it requires making another video, having another discussion on the same topic. I'll see you very soon again. Till then, all the best. Take care. Bye bye. Jai Hind.